आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्रीदिंग लेंथ इन लॉन्ग वेल्डेड रेल के बारे में स्टडी करेंगे। लॉन्ग वेल्डेड रेल, जो भी रेल लेंथ, वेल्डेड रेल लेंथ मोर देन 250 मीटर से एबव होगा इन ए ब्रॉड गेज, दैट विल बी टर्म्ड एज ए लॉन्ग वेल्डेड रेल। आजकल जो इंडियन रेलवे है, जो भी रेल की लेंथ एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज मोर देन 260 मीटर। तो फॉर हाई स्पीड and low maintenance we go for the long welded rail। तो इसमें जो कोई भी लॉन्ग वेल्डेड रेल को हम लोग 3 सेक्शन में बांट सकते हैं, 2 एंड 1 एंड 2 एंड थर्ड इज ए सेंट्रल पोर्शन। जो सेंट्रल पोर्शन होता है नॉन ब्रीदिंग लेंथ होता है, दैट डजंट go in expansion and contraction. Breathing length is that length which experiences the expansion or contraction due to change in temperature. So we can say breathing length, breathing length, breathing length, breathing length in a long welded rail, breathing length in a long welded rail, in a long welded rail is that length is that length is that length is that length which experiences expansion or contraction due to change in temperature, which experiences which experiences which experiences which experiences expansion which experiences expansion oblique contraction due to variation in temperature. We can say due to variation in temperature. Due to variation in temperature. So breathing length, we can say that end portion of the rail, which is normally 100 meter in case of Indian Railway. It depends upon the जो हम फास्टनिंग यूज कर रहे हैं, जो स्लीपर यूज कर रहे हैं, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर और ओवरऑल क्वालिटी पे भी इस लेंथ डिपेंड करती है। ये इसके जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है, इसको हम लोग रिस्ट्रेन करते हैं बाय लॉकिंग अप विद द स्लीपर एंड एम्बेडेड बायलास्ट। तो इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस की लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं इन द दिस ब्रीदिंग लेंथ पे, सो दैट उसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ना हो, जो रेल की लेंथ है बराबर रहे इन द लॉन्ग वेल्डेड रेल। So long weighted rail, we can say this is non-breathing length. Breathing length means non-breathing length plus 2 times the breathing length will be the overall long welded rail. Now, यदि rail is free to expand and contract, तो जो इसका length change होगा delta L, that will be the multiplication of thermal coefficient, temperature and length. So we can say if this is free to due to temperature variation, इसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन यदि हम फ्री करें तो इसका जो चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा एल, दिस डेल्टा एल विल बी इक्वल टू दिस डेल्टा एल वी कैन से चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल इज अ चेंज इन लेंथ, and alpha is coefficient of linear expansion or thermal expansion, coefficient of linear expansion
and T is a change in temperature, change in temperature, change in temperature, or we can say variation in temperature, Sometimes it is denoted by delta T also. Initial temperature minus final temperature means temperature at the time of laying, and then final temperature. So variation in temperature in degree centigrade. This is per degree centigrade. Then change in length delta L will be given by but it is a multiplication of coefficient of thermal expansion into length into variation in temperature T. So जो length of rail expand होगी, if it is allowed to freely expand, it will be by amount L into T. Now this change in length we restrain by, since जो भी रेल होती है वो फिक्स रहती है विद द क्लिप्स, जो पेंड्रॉल क्लिप्स हैं, क्लिप्स के साथ में स्लीपर के साथ में, स्लीपर इज एम्बेडेड इन द बैलास्ट. तो जो जब इसमें ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा, जो भी फोर्स डेवलप होगा, इट विल काउंटर एक्टेड बाई, इट विल रिस्ट्रेन बाई द ballast and sleeper. So it will not allow to move it forward unless otherwise जो force या जो internal stresses develop होते हैं in rail due to temperature, it exceeds the restrained जो frictional force मोबिलाइज हुआ है उससे ज्यादा. तो हम लोग कैलकुलेट करके जो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए स्लीपर है, इमेंडमेंट ऑफ बैलास्ट है, वो ज्यादा रखते हैं, सो दैट इट इज ऑलवेज मोर देन द इंटरनल स्ट्रेसेज जो कि लॉक्ड अप है रेल में, उससे ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो. तो जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी फोर्स, जो इंटरनल स्ट्रेसेज इन द रेल ड्यू टू थर्मल फोर्सेज होगा, दैट विल बी P ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो हम लोग एक दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि जब ये डेल्टा एल जो बढ़ रहा है, ये इसको एक्सटेंड करना है, यदि हम यहाँ पे एक वाल बना दें और रेल को बढ़ने से रोकें, तो जितना इस वाल को फोर्स लगाना पड़ेगा दैट इज P ओवर A. वो इतना स्ट्रेस का इधर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट रेल का जो इंटरनल थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप है उसको हम लोग रोक सके. एंड ये काम जो करता है वो हमारे जो स्लीपर्स हैं, जो फास्टनिंग के साथ में रेल के साथ में बंधे हैं, एंड दे आर एम्बेडेड इन द बैलास्ट, दे ऑफर, जो एक स्लीपर एक सिटिंग पर लगभग ये जो ऑफर करता है दैट इज 300 kg का ये अपोज करेगा. जो रजिस्टिंग फोर्स होगा एक स्लीपर का एम्बेडेड इन द बैलास्ट, वो 300 kg के बराबर करता है. तो नंबर ऑफ स्लीपर्स विल बी देयर टू रजिस्ट internal forces, internal stresses developed due to the thermal forces, मतलब कि जो थर्मल स्ट्रेसेज होंगे उसके द्वारा जो भी इसमें फोर्स डेवलप होगा उस काउंटर होगा रेजिस्टिंग फोर्स से. तो इसको फर्दर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें काम होता है. तो स्ट्रेस इज P by A and the strain will be delta L over L, or it will obey the Hooke's law. It will obey the Hooke's law in which Young modulus is stress over strain. So E is Young modulus, and it will be equal to stress over strain. And we can see stress is P by A, strain is delta L by L, and then solving it we get E into delta L over L into A is equal to force, internal force which has been locked up
in the which has not been allowed to move, that जो कि locked हो गया because of this resisting force, वो जो P होगा that is delta L over L into A. Now we know that delta L is equal to L into alpha into T, change in variation. So we can place here L into alpha into T. This L and this L get cancelled. So here we find the resisting force required. Either we can say resisting force required, or we can say locked up internal force. So locked up internal thermal force. So here we can say locked up internal thermal force will be P is equal to E into alpha into T into cross-sectional area of the rail, and R is the resisting force. R is the resisting force. एक स्लीपर हमारा कितना रेस्टिंग फोर्स ऑफर करेगा? तो ये जो दो रेल होती हैं, एक रेल का जो स्लीपर होगा, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल ऑफर फ्रॉम 0.3 टन टू 0.5 टन रेजिस्टेंस. सो वी कैन से सेफली वी कैन टेक दिस विल ऑफर 300 kg का resting force one sleeper will offer. Then we require how many number of sleeper will be required? This number will be P over R, or we can say E into alpha into T into A over R, and R is nothing but resistance offered by frictional resistance offered by one sleeper immediate in the ballast, and S is the spacing of sleeper, which is generally 0.65 to 0.60. This is between 0.60 meter to 0.65 meter होता है जो spacing होगा within the sleepers. This is varied from 0.60 to 0.65 meters. Now L, what will be this length? What will be the length required to place the sleepers, number of sleepers, so that their longitudinal movement is restrained? So L will be n minus the sleeper n minus 1 into n minus 1 into the spacing. Then we get this length of the how much length that breathing length will be required to restrain the longitudinal movement of the rail. So we can take up one problem on this. Determine the minimum theoretical length of long welded rail beyond the central portion of 52 kg per meter rail would not be subjected to any longitudinal movement due to 30 degree centigrade temperature variation. So data is given: cross sectional area 66.15, Young modulus is given 2.10 into 10 to the power 6. Coefficient of thermal expansion is given 11.5 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. Spacing of sleeper is given 60 centimeter, means 0.60 meters, and resistance offered by per sleeper is 300 kg. So we need to solve this. So let us input A is given in the problem 66.15. 66.15. E is given in the problem. E is given 2.10 into 10 to the power 6. 2.10 into 10 to the power 6. Alpha is 11.5 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, and temperature is given 30 degree centigrade. Temperature is given, temperature variation is given 30 degree centigrade. So let us input 30 degree centigrade, and this is the value, this is value, and unit will be this is in centimeter square, is kg per cm square, this is per degree centigrade, and this is degree centigrade. So P will be equal to 66.15
into 2.10 into 10 to the power 6 into 11.5 into 10 to the power minus 6 into 30. This and this will get cancelled, and we can calculate it. 66.15 into 2.10 into 11.5 into 30 is equal to 47925. P will be equal to 47925.675 kg. The internal internal thermal force developed in the rail is 47925.675. Now we require how many number of sleepers will be required to resist this force. So P is given 47925.675, and each sleeper embedded in ballast is having resisting force or frictional force is 300 kg. So we can get number of sleepers required. So divided by 300. So number of sleepers required will be 159.75, 159.75, say 160 numbers, say 160 numbers. Now the spacing is given 0.60 meters. So length of breathing length will be required. L is equal to L will be n minus 1, means nothing but 160 minus 1 into spacing is 0.60. So we can calculate it. But we can calculate it 160 minus 1 equal to 159 into 0.60 means 95.4 sleeper. 95.4 sleeper will be required. Sleepers will be required. Say sleepers will be required. Sorry, 95.4 meter. 95.4 meters. 95.4 meters breathing length will be required at one end to restrain the longitudinal movement of the rail. So in both the side taking 2L, so it will be 2 times into 95. 2 times 95, we can find say it is 190.80. We can say it is 191 meter or 200 meters. Or 200 meters means each side, if we keep 100 meter breathing length, so there will be longitudinal movement of this rail will be restricted, and this LWR, even though after this also we provide the switch extension joint etc. This is theoretical calculation of finding out breathing length of the rail due to temperature variations. Thanking you. Hope this will clear the what is breathing length of the rail. Thanking you.